A very good evening to all of you and welcome to our platform concept detector decoder technical. As you have seen the thumbnail of the video, this session is a important information and the electrical engineering, the concept of electrical engineering for the new vacancy of Odisha Public Service Commission. As you have seen, Odisha Public Service Commission and the vacancy of assistant industry officer. एक्चुअली जो असिस्टेंट इंडस्ट्री ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में, उससे रिलेटेड ये सेशन रहेगा. और इस सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. फर्स्टली वी डिस्कस द सिलेबस ऑफ उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन एंड फॉर द वैकेंसी ऑफ असिस्टेंट इंडस्ट्री ऑफिसर, and after that we start a topic of electrical engineering. Okay, as you have seen, the number of vacancy in this number of vacancy is 151, or you can say it is a large amount of vacancy for the technical students. This is a large amount of vacancy for the technical students. Firstly, we discuss about the syllabus for this vacancy. For the syllabus, we can say there are two paper. First one is for general knowledge and aptitude. This session contain English, GK, Maths and reasoning of 100 marks and 2 hours. Okay, तो फर्स्ट सेशन होगा, फर्स्ट पेपर जो होगा वो जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का होगा. और इसमें आपके पास 100 मार्क्स का पेपर होगा. ये 100 मार्क्स का पेपर होगा और 2 आवर्स के लिए पेपर होगा. और जो सेकंड सेशन होगा वो आपके पास सेकंड पेपर होगा बेसिक इंजीनियरिंग से होगा. सेकंड पेपर होगा बेसिक इंजीनियरिंग से और वो होगा 300 मार्क्स का. 300 मार्क्स एंड 3 आवर्स का पेपर होगा. 300 मार्क्स का पेपर होगा. ठीक है. और ये पेपर क्वालिफाई होने के बाद, आफ्टर क्वालिफाइंग these two पेपर, there will be an interview of 50 marks. Okay, in the second portion, in the second paper, it's contain 8 subjects. In these 8 subjects I will teach you electrical engineering, basic electrical engineering. In this session we discuss about the syllabus of basic electrical engineering. The basic electrical engineering, that is the 4th chapter 4. It's contain DC network. First topic for the basic electrical engineering, DC network. In DC network we discuss about the Kirchhoff law. There are two law of Kirchhoff. First one is KCL and second is KVL. Okay, तो जो अपना फर्स्ट जो पोर्शन होगा उसमें डिस्कस करेंगे डीसी नेटवर्क. और डीसी नेटवर्क में हम KCL और KVL डिस्कस करेंगे. We discuss about the KCL and second about KVL. And the second point, that is the node voltage and mesh current analysis. Means there are two methods for analysis. First one is nodal analysis. And second is the mesh analysis. Okay, so in DC network, first point we will discuss Kirchhoff law, or there are two type of Kirchhoff law. First one is KCL and second is KVL. And after that, the next point is the nodal analysis, nodal or mesh analysis. उसके बाद जो next जो point होगा, that is the star delta conversion or star delta. In this session we discuss about what is the star connection, what is delta connection, how we can convert star to delta and from delta to star. And the third point is the superposition principle. In case of superposition principle, if a network contains more number of sources, then how can we calculate the current and voltage in the branch by using this theorem? We will discuss this in this point. And the third point is the single phase and three phase AC circuit. In this point we discuss about the single phase supply, three phase supply,
connection of RLC with the single phase circuit and star connection and delta connection. Means firstly we discuss about the average and effective value of sinusoidals. After this we discuss about the solution of RLC series circuit. After this we discuss about the solution of series and parallel circuit. Series और parallel circuit को discuss कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे. और उसके बाद हम लोग तो सिलेबस का पॉइंट रहेगा सीरीज पैरेलल रेजोनेंस. सीरीज पैरेलल रेजोनेंस मींस इसमें हम रेजोनेंस डिस्कस करेंगे. सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस. सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस. रेजोनेंस मींस द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट. स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर वोल्टेज और करंट आर इन सेम फेज. तो रेजोनेंस के बारे में डिस्कस होगा. उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज द लाइन एंड द फेज क्वांटिटीज. लाइन और फेज क्वांटिटीज. हियर वी डिस्कस अबाउट द लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट, ये डिस्कस करेंगे. और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास सॉल्यूशन ऑफ बैलेंस थ्री फेज सर्किट. बैलेंस थ्री फेज सर्किट डिस्कस करेंगे. बैलेंस थ्री फेज सर्किट मींस द सर्किट व्हिच having zero current in neutral. And after this the next point is the measurement of power in the three phase circuit. Three phase power measurement method. First one is the 1 wattmeter method. 1 wattmeter method. Second is 2 wattmeter method. Third is 3 wattmeter method. तो ये तो तीन मेथड आपके पास है, 1 वाटमीटर, 2 वाटमीटर, 3 वाटमीटर. ये तीनों मेथड इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट ऑफ पावर इन थ्री फेज सर्किट. उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट जो अपना है, फोर्थ पॉइंट मैग्नेटिक सर्किट एंड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन. इसमें हम लोग मैग्नेट के बारे में, अबाउट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ सिंपल मैग्नेटिक सर्किट. इन सिंपल मैग्नेटिक सर्किट डिस्कस करेंगे. उसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज द डीसी मशीन. इन डीसी मशीन्स we discuss about the DC motor and DC generator. We discuss about DC motor and DC generator. In DC motor we discuss about the construction of DC motor. DC motor कैसे बनती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. DC generator कैसा बनेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं DC मोटर के, DC जनरेटर के, वो डिस्कस होंगे. उसके बाद ईएमएफ इक्वेशन इन डीसी जनरेटर. जो डीसी जनरेटर है उसमें ईएमएफ की क्या इक्वेशन होगी, ईएमएफ इक्वेशन डिस्कस होगी. उसके बाद द टॉर्क इक्वेशन फॉर द मोटर स्पीड कंट्रोल इन डीसी मोटर. जो मोटर के लिए जो टॉर्क की इक्वेशन है, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, उसको डिस्कस करेंगे. और इसके स्पीड कंट्रोल के जो मेथड है, मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, डिस्कस करेंगे. उसके बाद एसी मशीन्स में ट्रांसफॉर्मर है, एसी मोटर है, अल्टरनेटर है, वो सारी चीजें डिस्कस होगी. तो फर्स्ट पॉइंट इज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर डिस्कस करेंगे. और सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में आपके पास क्या होगा, कंस्ट्रक्शन के बारे में, ईएमएफ इक्वेशंस के बारे में, नो लोड और लोड ऑपरेशन के बारे में. उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी के बारे में डिस्कशन होगा. ओके. तो जो सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, उसमें क्या क्या पोर्शन है, जो मेन पोर्शन है मैं उसको एक बार वापस से समराइज कर देता हूं. तो मेन पोर्शन डीसी थ्योरी, कंप्लीट डीसी थ्योरी सिलेबस में है. सेकंड जो आपका पोर्शन आएगा वो एसी थ्योरी सिलेबस में है. थर्ड जो पोर्शन आपके पास है मैग्नेट एंड मैग्नेटिक सर्किट
मैग्नेट और मैग्नेटिक सर्किट है। फोर्थ पोर्शन आपका ट्रांसफॉर्मर सिलेबस में है। फिफ्थ पोर्शन डीसी जनरेटर, इन सिंपल वे डीसी जनरेटर है। सिक्स पोर्शन डीसी मोटर, सेवन पोर्शन एसी सिंगल फेज मोटर और एसी मोटर, थ्री फेज एसी मोटर एंड द पॉलीफेज। ये जो पॉइंट्स है ये सिलेबस में हमारे है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में। ओके, तो हम फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज द डीसी थ्योरी। ओके, इन डीसी थ्योरी फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द चार्ज। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है, ए प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। सपोज this one is a particle, it's having a property of generating electric field around it. Okay, तो चार्ज क्या होगा? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल ड्यू टू विच इट जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज, अराउंड द पार्टिकल। यू कैन से मीन्स what is the charge? It is a property of particle due to which it generate electric field अराउंड इट। ओके, तो चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है, किसकी? पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। दैट्स व्हाई इट जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। तो जिसकी वजह से ये क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज हु डिस्कवर चार्ज? तो साइंटिस्ट है जिसका नाम है थेल्स। थेल्स डिस्कवर अबाउट चार्ज। थेल्स ने चार्ज की डिस्कवरी की। और उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है दैट इज द बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया? चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया कि चार्ज की दो प्रॉपर्टीज होगी, सॉरी, चार्ज के नेचर के बारे में बताया। चार्ज का दो नेचर होगा। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज द नेगेटिव चार्ज। ओके, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन था उसने चार्ज के नेचर के बारे में बताया कि चार्ज का जो नेचर है, चार्ज टू टाइप्स का होगा। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। एंड आफ्टर दिस बेंजामिन फ्रैंकलिन टोल्ड देयर इज अ फोर्स बिटवीन these two charge। ओके, और फोर्स के बारे में उसने क्या कहा? सिमिलर चार्ज रिपल ईच अदर और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। एक्चुअली जो थेल्स था, थेल्स ने चार्ज को डिस्कवर किया। थेल्स ने चार्ज को डिस्कवर करने के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज के नेचर के बारे में बताया कि चार्ज का जो नेचर है इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अगर ये सिमिलर है तो क्या करेंगे? रिपल करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। मींस इफ देयर आर टू पॉजिटिव चार्ज then there will the repulsion force between these two charges, repulsion force।
or you can say repulsive force. Okay, if two negative charge is placed near to each other, then there is also repulsive force. There is also repulsive force. Okay, but opposite charge attract each other. That's why you can say if positive or negative charge is placed near to each other, then there is attraction force between these two charges. Attraction force between these two charges, or you can also say similar charge repel each other or opposite charge attract each other. अगर सिमिलर प्रॉपर्टी के चार्ज होंगे, सिमिलर प्रॉपर्टी मींस यू कैन से बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव. अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तब क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और दोनों नेगेटिव होंगे तब भी क्या करेंगे, रिपल करेंगे. ओके, बट अगर अपोजिट प्रॉपर्टी है, अपोजिट प्रॉपर्टी मींस फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव. अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे तो उनमें बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन का फोर्स वर्क करेगा. कौन सा फोर्स वर्क करेगा, अट्रैक्शन का फोर्स वर्क करेगा. ओके, लेकिन जब बेंजामिन फ्रैंकलिन को पूछा गया कि कितना फोर्स वर्क करेगा तो उसका उनके पास आंसर नहीं था. देन द अनदर साइंटिस्ट नेम Coulomb told about the amount of force work between these two charge. यानी जो चार्ज है उनके बीच में कितना फोर्स वर्क करेगा इसके बारे में बताया Coulomb ने. So we can say told about amount of force between these two charge, between two charge. एक्चुअली बेंजामिन जो फ्रैंकलिन है जिसने प्रॉपर्टी बताई पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके, नेचर बताया पॉजिटिव और नेगेटिव, उसने कहा कि जो फोर्स वर्क करेगा अगर सिमिलर चार्ज है तो रिपल्सन का फोर्स होगा, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा. लेकिन कितना फोर्स होगा इसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं बता पाया. दैट्स व्हाई जो नेक्स्ट साइंटिस्ट था उसने बताया Coulomb ने क्या बताया, अबाउट द अमाउंट ऑफ फोर्स, कितना फोर्स वर्क करेगा इसके बारे में Coulomb ने बताया. और अकॉर्डिंग टू Coulomb इफ टू चार्ज Q1 and Q2 are placed at r distance from each other, two charge Q1 and Q2 are placed at r distance from each other. अगर दो चार्ज आपके पास Q1 और Q2 r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, in that case the force acting between these two charge F is equals to K Q1 Q2 upon R square. ओके, जो फोर्स वर्क करेगा तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ Q1 एंड Q2. दो चार्ज है, इनका जो फोर्स होगा, इनके बीच में जो फोर्स होगा दोनों चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल प्रोपोर्शनल होगा. मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फर्स्ट पॉइंट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2. सेकेंड पॉइंट, force is inversely proportional to square of distance between these two charges. Force is inversely proportional to square of distance between these two charges. और दोनों को combine करेंगे then we get F is equals to K Q1 Q2 upon R square, where K is constant. I'll just revise it again. एक्चुअली जो बेंजामिन फ्रैंकलिन था उसने कहा कि सिमिलर चार्ज रिपल ईच अदर, तो सिमिलर चार्ज होंगे रिपल करेंगे और अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. लेकिन कितना फोर्स वर्क करेगा इसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं बता पाया. देन
द नेक्स्ट साइंटिस्ट कुलाम, कुलाम ने दोनों चार्ज के बीच कितना वर्क है, फोर्स वर्क करेगा उसके बारे में बताया. और अकॉर्डिंग टू कुलाम, if two charge q1 and q2 are placed at r distance from each other, मतलब r distance पे q1 और q2 रखे हुए हैं, in that case the force acting between these two charges is directly proportional to multiplication of q1 and q2. जो q1 और q2 है इनके मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा फोर्स. सेकेंडली इट्स ऑल्सो डिपेंड the distance between these two charges, or you can say the force acting between these two charges is inversely proportional to square of distance. Okay, when we combine these two factor, then we get f is equals to q1 q2 upon r square. f is equals to q1 q2 upon r square. और जब proportional sign remove करेंगे, in that case we get f is equals to k q1 q2 upon r square. Is it clear? Where k is constant and the value of k is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. Value of k is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, where epsilon is permittivity of medium. Epsilon is permittivity of medium, and the unit of epsilon, that is farad per meter. The unit of epsilon is farad per meter. Okay, when I represent it by epsilon 0, this one is the permittivity of vacuum. And the value of epsilon 0 is equals to 8.854 into 10 to the power minus 12 farad per meter. Okay, this is about the charge. Now the next point is the unit of charge. The SI unit of charge is Coulomb, and the second CGS unit, that is the ESU, state Coulomb, or you can say electrostatic unit, that is the state Coulomb. And the largest unit of charge, that is the Faraday. Largest unit of charge, that is Faraday, and the 1 Faraday is equals to 96,500 Coulomb. ओके, ये 10+ स्टैंडर्ड के चीजें हैं, आप इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड पढ़ाइए. देखिए, एक्चुअली हमें बेसिक से पढ़ना होगा. अगर बेसिक से नहीं पढ़ेंगे तो आगे के कंसेप्ट आप एड ऑन नहीं कर पाओगे. बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग ब्रांचेस से, सिविल से है, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट भी होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी होंगे, कंप्यूटर के भी होंगे, तो अलग अलग ब्रांचेस के स्टूडेंट्स होंगे. बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये बहुत पहले पढ़ा था, तो वो इसके साथ कनेक्ट करने के लिए बेसिक से ये चीजें करवाई जा रही है. क्योंकि अगर बेसिक से नहीं पढ़ोगे तो इनके साथ में आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे. ओके, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको अभी इसका आइडिया नहीं होगा, यूनिट लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फेराडे के बारे में नहीं पता होगा. तो 1 फेराडे इज 96,500 कूलम. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक करंट. This one is a conductor. You already know about the conductor and the current. This one is conductor,
and there are more number of charge carriers inside the conductor. Let this one is electrons. Electrons are also the charge carriers, and these charge carriers move in any direction. I'm not applying a external force, or you can say external EMF on this circuit. These electrons are moving in a direction. Then the current is defined as number of, or you can say amount of charge flow, amount of charge flow per unit time is called electric current. Amount of charge flow per unit time is called electric current. Okay, you can also say rate of charge flow. Rate of charge flow is known as इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली इससे चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे और चार्ज कैरियर्स मूव होंगे, दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो से चार्ज मूव होगा। क्या होगा? चार्ज मूव होगा, और चार्ज मूव होगा उससे इसमें क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। तो करंट क्या होगा? करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, यानी कि यूनिट टाइम में कितना करंट चार्ज फ्लो होगा, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। और यू कैन आल्सो से द रेट ऑफ चार्ज फ्लो, रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज फ्लो की जो रेट होगी उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। सो वी कैन से द इलेक्ट्रिक करंट इज charge flow divided by time taken. Electric current is charge flow divided by time taken. We can also say I is equals to Q upon T. I is equals to Q upon T. Okay, and the unit of current is ampere. Unit of current is ampere. Okay, and the 1 ampere is equals to 1 coulomb per second. 1 ampere is equals to 1 coulomb per second. Actually, I is equals to Q by T. The unit of Q is coulomb. The unit of time, that is a second. That's why we can say 1 ampere is equals to 1 coulomb per second. Okay. Now, the next point is electric current is scalar quantity or vector quantity? Can anyone tell me? Electric current is scalar quantity or vector quantity? The electric current is a scalar quantity. इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर होगी। स्केलर क्वांटिटी मींस which having no direction, which having no any direction. But we know electric current has a direction from a high potential to low potential. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। फिर ये स्केलर कैसे हुआ? एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ द वेक्टर, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज द स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट does not follow the rules of
rules of vector addition, that's why it is considered as scalar quantity after having the direction. एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लेकिन इट डज नॉट फॉलो द rules of vector addition, that's why it is considered as the scalar quantity. Okay, now as we know charge q is equals to charge q is equals to ne. Actually the charge on one electron that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Charge on one electron that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. That's why the charge on n electron is q is equals to ne, because the value of E is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, so we can also say the current is I is equals to q by t. You can also write it ne by t. करंट I क्या होगा, q by t होगा. इसको ne by t भी कह सकते हैं. करंट को क्या कह सकते हैं, ne by t भी कह सकते हैं. Where n is number of electrons flow, and t is the time. E, the value of E is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and t is the time taken. Okay, is it clear? हाँ, डायरेक्टली नोट्स बना सकते हैं. Okay, I just revised the current. The question is what is the current? Actually जब भी कोई वायर होगा, वायर से चार्ज कैरियर्स फ्लो होंगे, तो चार्ज फ्लो होगा. सपोज इससे चार्ज कैरियर्स फ्लो हो रहे हैं, मींस इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स फ्लो होंगे, तो क्या फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा. और अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, और यू कैन से द रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. मतलब आपका यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा, यानी जो चार्ज फ्लो की जो रेट होगी, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल I. द इलेक्ट्रिक करंट is represented by the symbol I. Electric current is represented by symbol I. Okay, and we can also say electric current is equals to charge flow divided by time taken. So we can say I is equals to Q by T. I is equals to Q by T. The unit of electric current is ampere. And 1 ampere is equals to, the unit of charge is coulomb, the unit of time is second. That's why 1 ampere is equals to 1 coulomb per second. 1 ampere is equals to 1 coulomb per second. Or after this, the next important question is electric current is scalar quantity or vector quantity? Electric current is scalar quantity. Why? क्या इसमें डायरेक्शन नहीं है? Electric current having the direction. Electric current flow from high potential to low potential. ठीक है? Beside having the direction, it is a scalar quantity because it does not follow the rules of vector addition. ये vector addition के rules को follow नहीं करता. That's why it is a scalar quantity. Okay. Now the direction of now you can say the value of electric current, that is I is equals to Q by T, and we know the charge flow
charge flow Q is equals to NE, where N is number of electron flow and E is 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb. E is 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb. Okay, then we can say the total charge flow, that Q is equals to NE. Q is equals to NE. By putting this value, we can say I is equals to Q by T, or we can say NE by T. Okay, if a number of electron is given, then and we have to find the value of current, then we have to use this formula I is equals to NE by T. इसका use करके हम current निकाल सकते हैं. Now the direction of electric current. The next point is the direction of electric current. Direction of electric current. When we connect a load to a battery, or you can say a cell, एक बैटरी से या एक सेल से लोड को कनेक्ट करेंगे, suppose this one is a load, a lamp is connected with a battery, then electron flow from negative terminal of battery towards positive terminal of battery. इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे. ओके, एंड द करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू negative terminal. So we can here we can say the direction of electron flow, direction of electron flow is from negative terminal to positive, or you can say low potential to high potential. Low potential to high potential. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली आता है. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द सर्किट इज from low potential to high potential. You can also say from negative terminal of battery to positive terminal of battery. From negative terminal of battery to positive terminal. Okay, the electron flow in circuit from negative terminal to positive terminal, you can say low potential to high potential. The next one is the direction of electric current. Next point is direction of electric current. Direction of electric current. इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम, यू कैन से अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ electron flow, opposite to direction of electron flow, or you can also say from positive terminal of battery to positive terminal of battery to negative terminal of battery. ओके, तो डायरेक्शन क्या होगी करंट की? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होगा. Is it clear? So we can say the electron in the circuit flow from negative to positive, or you can say low potential to high potential, but the current flow
in the opposite direction of current, opposite direction of electron flow. That's why the current flow from positive terminal to negative terminal, or you can also say high potential to low potential. Current किधर flow होगा? High potential से low potential flow होगा. Is it clear? Now the next, now the question based on this. Question based on this. If 10 ampere, or you can say if 12.5 into 10 to the power 18 electrons flow through the wire in 4 seconds, find the current flowing through the wire. The question is given, the number of electrons flow through the wire that is 12.5 into 10 to the power 18, or you can say the number of electrons flow through the wire in 4 seconds. 4 seconds means the time t is equals to 4 seconds. Time t is equals to 4 seconds. 4 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे? 12.5 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे. And we have to find the value of current. As we know current is, as we know electric current is I is equals to Q by T and E by T. Electric current I क्या होगा? Q by T, or you can also say N E by T. The value of N is given 12.5 into 10 to the power 18, and the value of E, as we know the value of E is that we have to remember E is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb. That's why we can say 1.6 into 10 to the power minus 19 divide by the time taken is 4 seconds. That's why we divide it by 4. Then I is equals to, when we multiply 12.5 to 1.6, then we get 20 into 10 to the power 18 and minus 19. That's why it is 10 to the power minus 1 divided by 4. Then you can say 5 into 10 to the power minus 1, that is equals to 0.5 ampere. That is equals to 0.5 ampere. Is it clear? If 12.5 into 10 to the power 18 electron flow through the wire in 4 seconds, and then we have to find the current flow through the wire. Then we have to find current flow through the wire. Then we know the current I is equals to Q by T. That is equals to NE by T. The value of Q is NE, and N is given 12.5 into 10 to the power 18 into the value of E is 1.6 into 10 to the power minus 19. इसको multiply करके divide करेंगे by 4 से, then we get 0.5 ampere. Now question writes, charge carriers of current in conductor, or you can say metal, charge carriers of in metal in semiconductor, in electrolyte, क्वेश्चन है कि जो मेटल्स होते हैं इनमें चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, सेमीकंडक्टर्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होंगे. इन मेटल्स करंट फ्लो ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स में जो करंट फ्लो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन से फ्लो होगा. इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर
current flow due to free electrons and holes, free electrons and holes. But in case of electrolyte, current flow due to the positive and negative ions, positive and negative ions. ओके, तो आपके पास अगर मेटल्स है तो करंट किससे फ्लो होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन से। अगर सेमीकंडक्टर है तो करंट किससे फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल से। और अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है तो करंट फ्लो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से करंट फ्लो होगा। इज इट क्लियर? ओके, इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इस सेशन के लिए हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी मैं थोड़ा सा बेस के बारे में बता दूं। जो अपना प्लेटफॉर्म है कंसेप्ट डिकोडर। कंसेप्ट डिकोडर पे जो ओपीएससी है, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसकी तरफ से जो न्यू वैकेंसी जारी हुई है, न्यू वैकेंसी असिस्टेंट इंडस्ट्री ऑफिसर की जो न्यू वैकेंसी जारी हुई है, इसके लिए स्पेशल बैच शुरू हो रहा है। और बैच है चाणक्य बैच, जिसमें पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जिसमें 15,000 एमसीक्यू रहेंगे, नोट्स और पीडीएफ होगा, टेस्ट सीरीज होगी एग्जाम पैटर्न पे। और इसके साथ साथ जो बेसिक इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है, उसमें 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट्स है। उन 8 सब्जेक्ट के लिए स्पेशल टीम आपके पास में रहेगी। सभी सब्जेक्ट के लिए सेपरेट फैकल्टी रहेगी, जो आपको कंप्लीट जो टेक्निकल जो पोर्शन है वो कंप्लीट करवाएगी। और नॉन टेक्निकल पोर्शन है, जैसे कि आपका इंग्लिश है, मैंने आपको पहले भी बताया है, नॉन टेक्निकल पोर्शन में इंग्लिश, जीके, मैथ्स और रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, मैथ्स और रीजनिंग, इसके लिए भी आपके पास स्पेशल टीम होगी। तो जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ओपीएससी की जो न्यू वैकेंसी है इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो डायरेक्टली चाणक्य बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। और कल अदर सब्जेक्ट की क्लास रहेगी तो वो भी आप लोग देखिएगा, डेमो क्लास रहेगी वो भी आप लोग देखिएगा। थैंक यू। और एक स्पेशल बात, अभी इस बैच पे 15% ऑफ चल रहा है, फीस 15% ऑफ है, तो अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू।